Assalamu alaikum, everybody. Um, we will thank you very much for joining right on time. I think we'll just wait for a few more minutes and then we will start our live webinar. Okay, Ji. So I think we've got about 20 participants. We should start on time. Yari Madad and Assalamu alaikum, everyone. Um, my name is Imran Phamani, and I will be your host for tonight. I have recently joined the Aga Khan Education Board for Pakistan as the team lead for digital outreach. And I'm glad that we've been able to restart these podcasts, these live webinars. We did one live webinar about 2 weeks back that was on quantum computing. Today, our topic is the much talked about STEM careers, and we'll soon learn what STEM actually means and how do we, how do we learn more about and find the careers in it. So, our objective is to engage our Jamaat, our youth. Okay, I'm getting this message that you can't hear me. Uh, Let me just. Hi, Imran. You are completely audible to us. Okay, thank you, Karam. So yeah, thank you. You can always write in the chat if there are any connection problems, but if you sometimes restarting your Zoom call works, sometimes you're restarting your computer works. If you're on your phone, you can turn your volume up or you can put headphones. So I was telling you that, our objective is to engage the Jamaat more and more now via digital means, because, while Aga Khan Education Board for Pakistan tries their best to do live,
physical seminars as well, but we've come to know that, and we come to that, हमें ज़्यादा से ज़्यादा audience मिलती है on our webinars, और लोग अपने convenience के मुताबिक join भी कर सकते हैं. इसीलिए हमने ये लाइव वेबिनार्स अब रीस्टार्ट किए हैं, पॉडकास्ट स्टार्ट किए हैं. हमारा जो career.substack.com पे हमारा न्यूज़लेटर है, जिसमें आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसमें जो है आप लोग अपना ईमेल एड्रेस सब्सक्राइब करेंगे. यू विल गेट ऑल द अपडेट्स फ्रॉम अस, you will receive emails from us, you will receive our brochures if there are new webinars or podcasts coming up. हमारा जो आज का ये सेशन है वो YouTube पर भी लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है. इसीलिए जो लोग YouTube पे क्लिक करना चाहते हैं, कुछ और लोग हमें YouTube पर भी देख रहे हैं इस वक्त. कुछ मैं हाउस रूल्स आप लोगों को बता दूं बिफोर आई गो टू द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर स्पीकर. हम कोशिश करते हैं कि हमारे सेशंस इंटरैक्टिव हों, लेकिन कभी-कभी ऐसा जरूर होता है that we are not able to take live questions in the middle of the session. हम अपने स्पीकर्स के साथ भी इंगेज करते हैं. हमारे कुछ खुद के सवालात हम पूछेंगे स्पीकर से. आप लोगों को कि जो भी सवालात हैं, you can use the chat option on your Zoom, and you can use the chat option on comments option in the YouTube channel as well, where you can post your questions or your queries, और हम उनको compile करेंगे at the end of the session. हम उनको डिस्कस भी करेंगे, हमें जितना वक्त मिलेगा उसके हिसाब से, और we will try to make this session as engaging as possible. I'll now introduce our distinguished speaker. Today we have with us Ms. Nausheen Hamad, who is a trainee psychotherapist. She is a certified educational counselor. She's a marketeer with over 15 years of experience and contribution in the secondary and tertiary education system of Pakistan. She's currently heading the A-level section of a leading convent school in Karachi. She also runs her own startup company, which is called Weeds Counseling and Talent Management. She has her own website and her own YouTube channel also. This startup provides career guidance, personal therapy, and co-curriculars to young minds for holistic growth, development, and curation. So welcome, Nausheen, if you unmute yourself. Yeah. Assalamu alaikum, everyone, and thank you, Imran, for a very warm introduction. और आप सबका खुशामदीद. I take this opportunity to thank the Aga Khan Education Board for Pakistan कि ये platform मुनक्किद किया जिन्होंने, and I think participants भी थोड़ा करके बढ़ रहे हैं, so we hope that we're able to deliver what we're expecting to. So Imran, before we just recording in progress. Okay, so before we really start, Imran, thank you for setting the house rules. We the basic objective, जैसे इमरान ने जिक्र किया, आज का टॉपिक है STEM. STEM थोड़ा सा सुनने में शायद हमारे ऑडियंस को एक वर्ड लगे. STEM is basically science, technology, engineering and mathematics. So आज के जो ऑडियंस हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो काउंसलर्स हैं, या चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, this webinar, we hope कि हमें इसकी बारे में मालूमात मिल सके, उसकी अहमियत का अंदाजा हो सके, and we are able to make some
make some life decisions after this information. So Imran, I think हमारे पास वक्त थोड़ा limited है, so हम formally what we had in mind कि थोड़ा सा पहले presentation कर लेते हैं, फिर अगर कोई सवालात हैं तो वो ले लेते हैं. How about that? जी, that's a very good idea. Please Okay. start with the presentation. Okay, so with the audience, हम लोग like Imran mentioned, कोई भी सवालात हम end में ले सकते हैं. आपको किसी भी किस्म की कोई confusion हो, so you can just absolutely ask. And just for referencing, हमने एक छोटी सी presentation बनाई है. मैं साथ साथ आपको explain करती जाऊंगी that what is STEM basically. So can we enable screen sharing, please, for me, Imran? Okay, I think till we're screen sharing, it just says the screen sharing is disabled by the host. I'll try once more. Yeah, I got it now. Just a second. Good share. Sorry for the interruption. One second, please. Ma'am, would it be possible for you to share the screen, if that's okay? Okay. Let me just see. Are you not able to, like, we just saw your screen once you clicked on the share screen button. Yeah. Yeah, it's right here. Can you see the presentation? Is it on the desktop? Yes, it's on the desktop. Yeah. Yeah, that's it. We got it. Thank you. Yeah, the button on the right. Yeah. So my apologies, audience. So हम बात कर रहे थे STEM, career and skills for the future. आज का webinar is going to look like something. What is STEM? The significance of STEM, STEM careers, how it impacts our life. So basically STEM क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसके careers क्या हैं, और ये सिर्फ एक career नहीं है, ये हमारा एक lifestyle है जिसकी वजह से हम impact हो सकते हैं अपनी जिंदगियों में. So basically STEM is a short form or an acronym of Science, Technology, Engineering and Math. ये चार साइंसदानों ने, एजुकेशनिस्ट ने, ग्लोबल थिंकर्स ने ये चार डिसिप्लिन्स को इकट्ठा कर दिया है, because the world feels that these four disciplines are very critical to our future, to our जो जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे जमाती बच्चे हैं, हमारे यंग माइंड्स हैं, उनके लिए इसकी नॉलेज, इसकी इंफॉर्मेशन किस कदर क्रिटिकल है. So ये चारों disciplines together हमारे जहन में critical thinking, innovation और problem solving को impact करते हैं, ना कि सिर्फ हमें career देते हैं, जो कि हम आगे जाके presentation में देखते हैं. So basically sciences में अगर यहाँ पे school के, college के बच्चे मौजूद हैं, university के students हैं, parents हैं, sciences is basically biology, physics, chemistry. And science, STEM basically अगर आप उसका ये slide का top अगर heading देखें, evidence based facts and theory. STEM is basically based on the law of the universe, all the sciences together. कि जब भी आप दो पत्थर रगड़ेंगे तो उसमें से आग निकलेगी. अगर आप किसी एसिड के अंदर कोई लिटमस पेपर डालेंगे तो वो अपना कौन सा रंग तब्दील करेगा. So there are certain laws of nature. So STEM is basically the study of the laws of nature, which we categorize in 4 areas. Sciences, technology, जो भी हमारे audience बैठे हुए हैं, technology, we can't emphasize technology को explain करने के लिए ये webinar itself ही काफी है, जिसमें हमारी digital modeling है, prototyping है, data analytics है, internet of things है,
machine learning, game development, and basically so much more. Then we have engineering, the various branches of engineering, which are civil engineers, civil, electronics, electrical, cyber security is another branch of engineering today, which is like, आज के दौर में probably like, actual physical police की कम जरूरत, and we feel कि cyber policing or cyber security की ज़्यादा जरूरत हो गई है. And then of course, then we have mathematics, which is mathematics is such a rule of nature. हम कोई कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, mathematics is inevitable. So इन चारों disciplines को together हम STEM कहते हैं. And इसकी education क्यों जरूरी है? Going back to the previous slide, I do hope कि हमारे audience को ये समझ में आ गया कि STEM है क्या चीज. STEM एक ऐसे discipline का नाम है जिसमें 4 चीजें हैं. उसकी पढ़ाई, उससे रिलेटेड करियर्स, उससे रिलेटेड काम, उससे रिलेटेड बिजनेसेस, और उससे रिलेटेड लाइफस्टाइल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, द वे वी अप्रोच लाइफ, ये सब कुछ स्टेम के जुमरे में आता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि स्टेम इतना जरूरी क्यों है, हमने एक वेबिनार क्यों रखा हुआ है इसके ऊपर, और हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं. सो बेसिकली दिस इज सो मच सो अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो स्टेम हमारे अंदर डालती है. जब हम अपनी एजुकेशन शुरू करते हैं, नॉर्मली हम क्लास 8 से सब्जेक्ट सिलेक्शन करना शुरू करते हैं. नॉर्मली हम कहते हैं हम साइंसेस लेंगे, ह्यूमैनिटीज लेंगे. साइंसेस में बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है. ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग. सो नॉर्मली व्हाट वी सी कि जैसे हमारा इंटरमीडिएट होता, लाइक वी हैव अ मैट्रिक एंड ओ लेवल्स, एंड देन वी हैव इंटरमीडिएट और ए लेवल्स, एंड देन वी हैव अ बैचलर्स, एंड देन वी हैव अ मास्टर्स. हर एक लेवल पे हमारे पास एज इंडिविजुअल्स एक चॉइस होती है कि हम कौन से डिसिप्लिन की स्टडी करें. इस वेबिनार का मकसद ये है कि अगर हम स्टेम को चूज करेंगे तो वो हमारे ब्रेन को कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे वे ऑफ थिंकिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को कैसे इम्पैक्ट करता है. चाहे हम अगर उसे आगे कंटिन्यू कर ले तो नथिंग लाइक इट, और अगर क्लास 9, 10, 11 में पढ़ने के बाद ए लेवल्स में कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छी बात है. बैचलर डिग्री भी उसकी कर ले तो क्या ही बात है, करियर उसका ले ले. हाउएवर इन ईदर ऑफ द केस हमें बेसिक एजुकेशन के ऊपर, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर स्टेम पे बहुत एम्फसाइज करना है, बिकॉज वो हमारी वे ऑफ थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है. एक छोटी, जब हम लोग ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, इमरान, आई थिंक वी वर टॉकिंग कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग. तो वी वर डिस्कसिंग लाइक फॉर एग्जांपल अभी आजकल पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं. इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी सिचुएशन बेहतर करे, but there has to be some, we have a life problem at hand right now. That's correct. So like how we really see it is that somebody's got to think critically कि ये कब से कब तक फ्लड्स हैं, इनका क्या मैग्नीट्यूड है, when is the water going to go, वो evaporate होगा, is it going to, क्या हम उसको कहीं पे like barrages से, कनाल से कहीं पे स्ट्रीम करेंगे, हम जो हम नया हाउसिंग सिस्टम बनाएंगे, मे बी एक्सपर्ट्स फ्रॉम शेल्टर होम्स कम इन, हम उसमें कौन से मटेरियल यूज करेंगे, कौन से सस्टेनेबल मटेरियल्स हैं उसमें, लाइक पर स्क्वायर फीट कितने लोग फिट करेंगे. सो ये सारी चीजें, इट्स जस्ट अ लिटिल एग्जांपल. सो यही अगर आप एक स्टेम के स्टूडेंट हैं, एक स्टेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इसमें आपकी अप्रोच निस्बतन फर्क होगी. आप उसको क्रिटिकली देखेंगे, आप उसमें मैथ्स को एंगेज करेंगे, आप उसमें नंबर्स को एंगेज करेंगे, आप उसको कैलिब्रेट करेंगे, and you will have an end game in mind. You will, yes, everybody has a wild idea. Okay, obviously the flood victims, they need new homes, they need to be rehabilitated. However, how that is going to happen, the what, when, how, and the cost of it, the STEM family provides a sustainable critical thinking model जहां हम analyze करते हैं, interpret करते हैं, infer करते हैं, evaluate करते हैं, और फिर हम उसमें न्यूमरेसी डालते हैं. न्यूमरेसी मीन्स हम उसको कैलिब्रेट करके उसका एक सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं. गोइंग फॉरवर्ड विद दिस, एक बहुत स्टीव जॉब needs no introduction. I think he's a co-founder of Apple, और पर्सनल कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट देने वाले पायनियर है वो स्टीव जॉब्स. सो आई रियली पर्सनली लाइक वन ऑफ हिज कोट्स जहां वो कहते हैं, in my perspective, science and computer science is a liberal art. It's something everyone should know how to use it, at least, and harness it. So it is no
how Steve Jobs puts it, ke aap jis bhi discipline ke ho, this is more like a way of life where you have to know how to use it, apply it, and engage it in your daily life. Excuse me. So to summarize it, STEM is a way of being and doing. It's just not a career. It's more like a lifestyle. That's what we really want to send out as a message, that it is very critical to be engaged with science, engineering, technology, and mathematics as a lifestyle, even so more as a career. यहाँ पे थोड़ा सा explanation के बाद इमरान, if we could be, अगर हम अपने audience के साथ एक video share कर सके तो. जी, I have that video online. I'll just share my screen now, and yeah. I'll stop share for myself. Yeah. This is the video which you wanted to play. To the audience, if you cannot see this video or if you're not hearing a sound, please let me know in the chat window. The Science, Technology, Engineering, and Math Career Cluster is about expanding our concepts of the universe and inventing the future. It centers on applying scientific methods, new technologies, and creative problem-solving skills to improve both natural and human-built worlds. STEM workers are behind the innovation in a wide variety of industries, such as healthcare, manufacturing, telecommunications, construction, and agriculture. Exciting technologies developed by STEM workers include everyday conveniences like smartphones and online shopping, to large-scale game changers such as climate change research and space exploration, to life-saving innovations like cancer treatments and Alzheimer's research. While all STEM fields involve solving problems and innovation, the work settings for STEM roles vary widely. For example, research and development scientists often work in labs to develop pharmaceuticals, biofuels, and other products, while IT workers may design websites from home offices. Engineers may split their time between an office to collaborate with colleagues and work on project plans, and a job site, where they may supervise construction, meet with contractors, and ensure safety. Historically, women and people of color have been underrepresented in STEM fields, particularly in IT, math, and engineering. Recently, government and industry leaders have worked to encourage more women and people of color to pursue STEM careers by revamping STEM education, highlighting female role models, and promoting more welcoming work environments in college programs and workplaces related to STEM. Quick facts to know. STEM occupations currently account for nearly 10 million jobs. Job growth of more than 8% is projected over the next decade, adding about 800,000 jobs. STEM employment has regional centers, but is expanding in new areas. Texas, New York, California, and Washington employ high numbers of STEM workers, while states with lower STEM job numbers like North Dakota, Tennessee, and Georgia have seen over 20% growth in STEM-related employment in recent years. Computer and technology-related occupations are growing STEM fields, with an increase of more than 500,000 new IT jobs projected across the next 10 years. STEAM is a related global education movement that incorporates the arts, such as humanities, music, language arts, visual arts, and design, into STEM. STEAM emphasizes using the creative process to investigate scientific concepts. While the job market may vary over time and location, STEM professionals have a strong degree of job security because of broad growing demand. I think this is unbelievable. I mean, what I heard was, Nausheen, that currently there are about 10 million jobs with 8% projection rates, and 500,000 of new jobs, I think only in the US are going to be created in these fields. So I think it's pretty exciting for me because I see the youth all around us in Jamaat and other parts of the country and the world talking about
science, technology, engineering, and mathematics in a separate in separate streams. But if you really understand all of this when it comes together, it really, really, really is a game changer in today's world, because we see a lot of students, kind of shying away from these careers, thinking that they might be, difficult to attend to, and they might take a little longer to study. But I think in the new age world, with the new technologies and new sciences, I think this is pretty exciting. Yeah. Yeah, Imran, absolutely. And as you mentioned that, in the new world, in the world today, I think bilkul, speaking very basically, I think before the pandemic, perhaps शायद कहते थे ना शायद 70% तक हमें STEM required था, और बाकी I think pandemic के बाद तो 100% हमें STEM required है. Way of life has changed, the way we think and do has changed. And given where the world is moving, our young people sitting with us today, technology is really the end game now. And for us to move ahead to combat अभी जो global warming है, जो हमारी globalization issues हैं, जो future challenges हैं, yes, and like you said, कितने लोग इसे shy out कर जाते हैं. So I think we all must get to know and get excited कि अब तो शायद shy out की भी option नहीं रही है. अब तो it's more like ये skills हमें equip करनी चाहिए. And even as an adult I feel कि इतनी सारी पढ़ाइयाँ और degrees करने के बाद भी अभी हमें अपने आप को technology से equip करना पड़ रहा है. There are online courses that we need to do today, let alone the kids. So kids को तो right from the beginning अपने आप को बिल्कुल head on रखना चाहिए और dwell in it sort of a thing. Absolutely right. I think the last baat aapne ki hai wo mujhe zyada hit ki hai, because even if we get out of college, we get into our jobs, and I work with the bank, for example, but I keep thinking to myself, what are the courses and what is the how do we keep upgrading ourselves? So this is not just for while you're studying in college and university. Even when you finish it off 10 years later, 20 years later, you got to do small courses, small diplomas in these fields to continuously upgrade themselves. So I think we have more than 30 participants. If there's any question at this moment, because we're probably a little halfway to this webinar, if there are any questions, you can raise your hand. I've given you the I've given you the idea of unmuting yourself. So go ahead, Shams, if you want to ask a question. अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बहुत खुशी इमरान साहब और नौशीन, ये जो स्टेम के ऊपर आप लोगों ने बातचीत की, ये गुफ्तगू बहुत अहम है हम सब लोगों के लिए. मेरा ताल्लुक आगा खान एजुकेशन से है, मैं गिलगित में होता हूँ, और मुझे बहुत शौक था कि मैं आप लोगों को सुनूं. एक चीज़, छोटी सी चीज़ मैं गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि स्टेम के अंदर लिटरेचर का कोई ताना बाना है या नहीं है, सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स और ये चीज़ें हैं, या अदब भी इसके अंदर शामिल है? काइंडली अगर नौशीन या आप मुझे समझा दें. बहुत शुक्रिया आपका इसमें शमूलियत का, एंड बहुत वैलिड, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि लिटरेचर, आई थिंक ये स्लाइड्स में अभी हमारे आगे सेक्शन में आ रहा है. वेरी वैलिड क्वेश्चन. जो आपने अदब की और लिटरेचर की बात करी, उसको हम जैसे STEM इज STEM, उसमें हमने एक वर्ड है स्टीम के नाम से STEAM, जहाँ पे आर्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं कि लिटरेचर, अदब और ये जो खूबसूरती और नज़ाकत के बगैर तो साइंसेस भी शायद अधूरी रहती हैं. तो हमारा जो पूरा वेबिनार है ये इसी तरीके से गाइडेड है कि ये जो बेसिक स्किल्स हैं हमारी स्टेम की, उसके अंदर तो अगर हम वो स्टेम में ए ऐड करके स्टीम बनाते हैं तो स्टीम तो बन सकता है, लेकिन हम इफ वी ओनली स्टडी लिटरेचर तो उसमें शायद फ्रॉम लिटरेचर मैथ की तरफ या साइंसेस की तरफ एक्सपैंड करना डिफिकल्ट होगा. लेकिन अगर हमने बचपन से या बेसिक हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस रिलेटेड है, उसमें एक जिसे कहते हैं कि हैव अ चेरी ऑन द टॉप, which is definitely literature, arts, humanity, languages.
Like, you being an educationist, this is such a cherry on the top like that. So very valid question. And yes, we do incorporate this later in our discussion. Okay, Nausheen, Thank you very much. Thank you. Let's go ahead with our presentation. Okay. So for the screen share, we have. Yes. So thank you, Imran. We'll carry this forward. So जैसे भी शम साहब ने भी एक बहुत वैलिड सवाल किया, the significance of STEM. This is a way of doing. Let me see if I could. Yes. So coming back after looking at the presentation, normally हम लोग जैसे STEM की significance से बात करें, आजकल की दुनिया में we say, चाहे हम educationist हों, चाहे हम industrialist हों, चाहे हम entrepreneurs हों, हम job aspirants हों, कुछ चार basic skills हैं which we feel or the world feels are very critical to our growth. One is communication, one is collaboration, one is critical thinking, and one is creativity. So somehow I do feel, or research R&D, अगर आप research and development के various articles उठाएं, जब हम STEM की education से वाबस्ता रहते हैं, so कहीं ना कहीं हमारी communication, जिस तरीके से हम अपने thoughts share करते हैं, अपने questions, ideas, solutions put up करते हैं, जिस तरीके से हम collaborate करें, जो the way we work together towards a common goal, जो हमारी critical thinking होती है, जिसकी हमने पहले बात की है, जिसमें logical approach, problem solving, calibration, और हमारी creativity, जिसकी अभी शम साहब ने भी बात करी, जिसमें हमारी various creative जो हमारे aesthetics है वो आते हैं. तो ये चार जो skills हैं, the 4 C's of the 21st century, ये चारों बहुत critically embedded हैं STEM program में. They help us मुख्तलिफ projects को लेके, they help us develop these skills in a much better way. और इन सब में से probably critical thinking being the top of it, where we did say that एक inherently calibration हमारे, the way we think and do is different. So it is one of the benefits of STEM that these 4 skills are far better and far embedded in a much in a much synergetic way when we are studying STEM. So later on building, when we say STEM as career benefits and lifestyle, इसके अंदर अभी हम आगे जाके careers पढ़ते हैं. Basically, like we say, this is the study of the laws of the universe. It is a field which is always changing. I think STEM में there is like every career, वो तो हम music में भी कह सकते हैं, languages में भी कह सकते हैं, लेकिन STEM में even so more, it is always changing. दुनिया से आगे कहते हैं ना कि सितारों से जहाँ सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, so हमेशा हमें like there's a whole world, पूरी दुनिया को हम study कर सकते हैं, मुसख्खर कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं. So that is the dynamism of STEM. Then later on, earning better. One of the key benefits is definitely आज की दुनिया में, where we have technology taking over, we have we are like sort of squeezed with resources. बिल्कुल jobs कम हो रही हैं, बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल हमारे लाइफ स्पैन्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल हमारा like मुख्तलिफ ग्लोबल इश्यूज हो रहे हैं. वहां पे एक पुराना 9 to 5 का जॉब का कॉन्सेप्ट शायद आगे जाके इतना इफेक्टिव ना रह पाए. ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, the internet itself is such a way, technology itself is such a way to earn better for that matter. So yes, along with that flexibility, I think हमने अभी इमरान ने भी जिक्र किया the post-pandemic का, where we flex, how flexible, like one of our participants, Shams, he's an educationist. I think यहाँ जितने भी अगर तालिब इल्म बैठे हैं, जो भी तालीम से associated हैं, लिटरली हमें पेंडेमिक में एक पैरेलल स्कूल क्रिएट करना पड़ा था, जहां पे एक फिजिकल स्कूलिंग अलग थी और ऑनलाइन स्कूलिंग अलग थी. So likewise, like how flexible, I think trading, communication, education, fashion, design, everything has become so dynamic कि चाहे आप आगे साइंसेस के स्टूडेंट रहे ना रहे, आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी the way you do and approach things.
So STEM is the only way. अगर हमें ये basic information होगी, हमारी critical thinking होगी, out of the box thinking होगी, so हम ये बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे. और इसकी 2-3 एग्जांपल्स डेफिनेटली फ्रीलांसिंग वर्क और रिमोट वर्क की हैं, जो कि आगे जाके probably बढ़ता जाएगा. एंड इवन चाहे फ्रीलांस वर्क या रिमोट वर्क ना भी हो, आगे की स्लाइड्स में we will discover that the general career benefits of knowing and understanding and doing STEM are far more higher than the other careers. Moving And on. but I'll just add one thing to this, Nausheen, Yeah. that you know, freelancing has become such a big community in Pakistan that, you know, the actual association of freelancers of Pakistan are going ahead and signing agreements with banks and other communities. And for example, banks are now marketing freelance as a product, and it's becoming easier now to, whatever the skill you have in the STEM field, whether you are creating games online, for example, whether you're creating you know, content online, whether you are a web developer, you can just go to websites as Upwork, Fiverr, It's Fiverr, and yeah. and you can start providing your services there. And again, you know, there are, the opportunities are unlimited. I've seen youth in Pakistan earning more than more than $10,000 on it, and it's even becoming easier to pull that money into, you know, your Pakistan account. So, you know, we don't have you know, excuses now, like, okay, if we give services to someone in the US or the UK, हम अपने पैसे कैसे उनसे कमाएंगे. बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है. और कोई भी ऐसी स्किल, अगर आप कुछ यू नो टेक्निकल पब्लिकेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. और रिमोट वर्क तो अब बहुत कॉमन हो गया. आई नो कंपनीज, बैंक्स इन द वर्ल्ड हु आर allowing you and only saying कि अगर आपने काम करना है तो रिमोट ही काम करेंगे. तो ऑब्वियसली अब आप घर पे भी काम करते हैं, यू नीड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड आपकी स्किल्स तो होनी चाहिए, एंड देन यू कैन वर्क remotely for them. You don't have to go to the US, Canada. You can actually work remotely and get paid in dollars. So I think that's a very, very important message for today. No, absolutely. Like, you know, जब इमरान आपने freelance की बात करी, remote work की बात करी, pretty much so. I think now we literally live in a metaverse in this time and age. So like literally, like it's like a parallel universe जहाँ पे trade हो रहा है. You know, you being a banker, you spoke of fintech the other day. And like, you know, जितने भी हमारे youth हैं, definitely वो अगर हम अपने आप को इक्विप करें, लाइक फाइवर और फ्रीलांस वर्क की बात है, उसमें भी जो जॉब्स हैं वो इतने आईटी गेड हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट है, चाहे वो कोडिंग है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे वो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो साइबर मॉनिटरिंग है. सो यस, देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग, एंड rightfully so. You know, that's a very big market for there, and we hope that we're all able to not only benefit from it and really equip ourselves with it. So yes, very, very valid example, Imran. So moving on, कुछ हमारे STEM careers जो कि, like, we have engineers, we have scientific researchers, we have pharmacists, we have mathematicians, we have food scientists, we have computer scientists, we have digital imagers, we have medical and clinical lab managers, and then some of them in demand are, एक हमने यहाँ पे cyber security miss किया हुआ है. Cyber security is really on the edge. Software development, actuaries mathematicians होते हैं जो कि statistical और analysis करते हैं, और various insurance companies, banks उनको hire करते हैं. And then aerospace engineering, mining, web development, data sciences, artificial intelligence, computer network architecture, hardware engineering, and so much and so forth. This is, I think, ये slides कम पड़ जाएंगी, ये सारा, like, you know, जो biosciences के कितने सारे fields हैं. So yes, these are all the careers of STEM. So, you know, while we were just like this, while we were formulating this, we really felt, और अभी एक हमारे audience में से भी सवाल आया कि, like, you know, what about literature and other careers? So हमारी audience जो बैठी हुई है, just for them to take a look at it, जैसे हमने बिल्कुल एक बेसिक सी स्लाइड बनाई है, जैसे मुख्तलिफ डिग्रीज हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे जो बच्चे हैं जिनके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स है, वो MBBS भी कर सकते हैं, वो यू नो फार्मा भी कर सकते हैं, वो डॉक्टर फिजिकल थेरेपी भी बन सकते हैं, वो BDS भी कर सकते हैं, और सारी इंजीनियरिंग की फील्ड्स खुलेंगी. अभी हमने इतने सारे डिग्रीज के अपने नाम लिए. आगे जाके जो, लाइक, यू नो, वेरियस पब्लिक
सर्टिफिकेशन और डिग्रीज हैं, CSS है, ISPR है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में बच्चे जाना चाहते हैं, मुख्तलिफ सारे प्रोफेशंस हैं। तो ये वो डिग्रीज हैं जो अभी तक हमने सारे लिस्ट किए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा साइंस रिलेटेड है। इससे आगे जैसे शम्स साहब ने एक सवाल किया था, ये कुछ वो डिग्रीज हैं जो बहुत ह्यूमैनिटीज की डिग्रीज हैं। ये वो डिग्रीज हैं जो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, उर्दू, बिजनेस स्टडीज, ये उनसे रिलेटेड है। सो हमारी जो डिस्कशन है उसका ये मकसद है कि अगर आपने लेट्स से आपने मैट्रिक या आपने ओ लेवल्स में आपने साइंसेस लिया हुआ है, फिर आपने ए लेवल्स में इंटर में भी आपने साइंसेस लिया हुआ है, तो आप जो पहले वाले हमने ये वाले जो सारे डिग्रीज बताए हैं और ये वाले जो सारे प्रोफेशंस बताए हैं, तो आप ये सारी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। और उसके साथ साथ आपके पास ये जो ह्यूमैनिटीज के ऑप्शंस हैं वो भी आपके लिए खुले हुए हैं। दैट इज आप सारा साइंसेस पढ़ने के बाद भी आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, BA कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद भी आप फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, उसके बाद भी आप फॉर एग्जांपल BBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग कर सकते हैं। और अक्सर बच्चे और वालिदैन भी मुझसे कहते हैं कि मैं इतनी सारी मुश्किल पढ़ाई करने के बाद क्या हम कोई लॉयर बन जाएं, और शुरू से हम तो इजी सब्जेक्ट्स लेते। तो रियली लाइक मे बी शायद ये बहुत एक बहुत सिंपल सी बात लगे, बट इवन लाइक यू नो आई हैव बीन अ मार्केटियर एंड आई अगर जब मैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की मार्केटिंग करने के लिए इफ आई हैड टू मार्केट शैम्पूज एंड जूसेस, इफ आई डिडंट नो कि उस शैम्पू की pH वैल्यू क्या है, या इस जूस की शेल्फ लाइफ कितनी है, या इसकी पेरिशेबिलिटी कितनी है, so I you know I really couldn't devise the marketing strategy for that matter. So अगर आगे जाके आप अपने करियर को लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की तरफ भी शिफ्ट करें, जिसका स्ट्रीम में अभी हम जिक्र करेंगे, उस पे भी साइंसेस पढ़ना, स्टेम अडॉप्ट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप उससे मुस्तफीद होंगे यकीनन किसी भी डिग्री के अंदर। हम लोग आई थिंक इमरान, जब हम लोग थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, हम फिल्म मेकिंग की बात कर रहे थे कि बेस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स हो, बेस्ट ऑफ द एक्टर्स हो, लेकिन अगर उसकी डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कैमरास नहीं है, वो एडिटिंग नहीं है, तो वो भी नहीं बन सकती, यू नो। So yes, so like all these degree options are open to us, like so STEM basically opens your canvas as wide as this. So yes, I think एक बड़ा अच्छा भी इस पे सवाल भी आया एक, I think we can probably take it right now. Saif, thank you very much. And he's asked a very interesting questions here, that people who lead nations and countries either study law or any form of social science. Now, again, that would be a little debatable because I haven't got the historical data of those people. But what he's saying is that usually it is observed that the science and engineering graduates are not that good in communication as compared to others. Should we say that the STEM graduates will become good workers, technologists, but not good leaders? Okay, very valid question. I'd like to know who has asked this. What's the name? Saif. Okay, Saif, very interesting question. Saif, interestingly, I have a student who's a doctor, so अपने USMLE के exam के लिए पढ़ाई कर रहा था. So, you know, he had about 200, 400 questions, and he was like, सारे सवालों में से around 40% questions उन्होंने डाले हुए थे empathy पे, कि भाई empathy, communication, क्लाइंट की होल्डिंग, पेशेंट की होल्डिंग कैसे करनी है, एम्पैथी कैसे देनी है. सो बेसिकली डॉक्टर्स आर जस्ट लाइक यू नो कि प्लेटलेट काउंट 40,000 से नीचे है तो डेंगू है और एडमिट कर दे. यू नो, यू आर राइट, देयर कम्युनिकेशन इज, आई मीन यस, दे आर वेरी सिंगल ट्रैक, दे आर वेरी बाइनरी. यू नो, जिस चीज को हम क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे हैं, दैट कुड बी अ नेगेटिव एज वेल, दैट कुड बी अ वेरी बाइनरी पर्सनालिटी. However, having said that, with any degree that we do, there is an element, हमेशा कम्युनिकेशन का कोई ना कोई उसके अंदर कोर्स डाला जाता है. हमेशा like all these, like the liberal art could be incorporated into it, and yes, it should be. जितने भी आप टॉप नॉच CEOs देखें, like you know the like various companies के आप heads देखें, normally उनके पास भी कोई ना कोई combination degree होती है ideally. So yes, leaders, when we talk of leadership, that is a very debatable like realm altogether. However, very basically speaking, कि आप STEM के साथ STEAM तो आप मतलब आप STEM के साथ ये सारी communication और leadership तो ऐड कर सकते हैं. लेकिन however, अगर आपको कभी ये सारी basic hardcore critical thinking का exposure नहीं हुआ, तो फिर उसको later on सीखना वो थोड़ा difficult होगा. So yes, very valid question. Like the communication element is critical, the literature
like somebody else mentioned, is critical, the aesthetics is critical, but yes, it could be incorporated. और हमारे जदीद education में वो हैं courses available, जैसे कि मैंने अभी USMLE का जिक्र किया. USMLE एक like you know, it's the foreign exam जो doctors देते हैं. So very valid question. Thanks for taking that. And I think I'll just take 1 second more and 1 minute more to answer that question. You said that, is it possible that the STEM graduates will become good workers in technology, but not good leaders? Mera sirf, when I see good leaders and I see, you know, people even in the technology field, such as one example, Steve Jobs, or bahut sare multiple you know, examples of scientists, all of them came out and communicated to the world what can be done. And that's how we know them today. All the top scientists, whether they are Muslims, whether they're non-Muslims, उन्होंने कहीं लिखा, किसी को बताया, तो आज हम उनकी बात करते हैं, स्टडी करते हैं. तो I think, yes, when you know something, you definitely communicate it somehow or the other. So I think वो leaders जो in-depth knowledge नहीं रखते, अपनी फर्म की, अपनी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप किया, तो वो शायद अच्छे स्पोक्स पर्सन तो बन जाएं, लेकिन जब तक उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा in any of the science and technology field, if then people will probably fool them more rather than you know, they communicating. Absolutely. I think that's my take. Thanks, Nosheen. Let's go ahead for I'll take some questions later as well, so you can go ahead now. All right. So going ahead with this, so we spoke of degree options. So एक और video है, you know, it's a Imran, if you could play this, I'll Yes, really I take will. your hand here. I'll just that. Okay, this was the last video, by the way. We're not going to show more videos, but we felt it will just cause some clarity. Yeah, interesting video, and I think in this relation we've got
another valid question that Zora Daudani, thanks for your question. She says that, how do we narrow down our multiple interests within STEAM? Because sometimes get very exhausting and overwhelming, and how to work on them simultaneously, or do we choose one? How do we go about it? Okay, so if I could read the question, is this how do we narrow down our multiple interests with STEAM, as sometimes can exhaust us to learn? Yes, very, very valid question. Sometimes it's very overwhelming, like, like just being all over the place. So I think like if we could just start back from the basics, to be like, jab hamare jo students hain, jo younger classes से subjects ले रहे हैं, definitely वो younger classes में तो sciences ले ही लें, सीधी सी बात है. And later on, अगर like metric और O levels के बाद A levels में, let's say जैसे if this is Ms. Doltana who's asked this, if you feel कि अपने वाकई अपने interest है, various techniques हैं again STEM के various scientific tests हैं, जैसे एक psychometric testing आती है, जो कि आपका आप right brain है, आप या आप left brain है, आपका interest कहाँ ज़्यादा है, then you may want to narrow down subjects. You may want to say, no, I've had my basic interest and now I want to pursue this. So yes, there are scientific ways of really choosing your subjects and really being guided, and you need not exhaust yourself. So just as a guiding principle, कोशिश हम जरूर करते हैं, हम सब as students, as counselors, as parents, as educationists के ज़्यादा से ज़्यादा STEM की तालीम के सामने रखें और वो पढ़ें. However, अगर आपका interest है बहुत ज़्यादा languages की तरफ, तो आगे जाके आप अपने सब्जेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, डिग्रीज भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक स्टेम इंफॉर्मेशन हमेशा आपके लिए मददगार रहेगी. So should we go forward? Ms. Chatar, answer the question? Yes, please. We can go ahead and we can take the questions later as well. Okay. So moving forward very quickly, however, we screen share. That's one of my best things. Okay. So just a second. Yes. So अभी जैसे हम बात कर रहे थे various professions की, हमने कुछ slides भी देखे. Now उसमें अक्सर जो statistics है वो UK, US के आ रहे हैं, and like so we just thought, how about we really look at like our problems, our own problems, like how various issues जो कि आज के, for example, जो बीच वाला कॉलम है उसमें एक communication is a challenge today. I think पहले अगर हम लोग बैठे होते, अगर STEM बहुत ज्यादा इफेक्टिव ना होता हमारी लाइव्स में, तो हम बस 4 लोग कमरे में बैठ के बात करते, फिर हमने थोड़ा सा और उसको एक्सपैंड कर दिया. आज हम एक लाइव वेबिनार कर रहे थे, लोगों को रीच आउट कर रहे हैं. So communication में today, if you're sending samples in a business physically, tomorrow maybe we just have 3D printing, और आप बस आप एक कोड डालें, वहां से आपको 3D print होके कोई मुख्तलिफ samples मिल जाए आपके business के. So communication को technology बहुत impact करेगी, और उसी से हमारी various जो हम apps create कर रहे हैं, psychotherapy की apps आ रही हैं, अब fasting की, weight loss की apps आ गई हैं. So be it communication in various businesses, उससे हमारी टेक्नोलॉजी वेरियस एप्लीकेशंस इम्पैक्ट हो रही हैं. और जैसे पहले मैंने भी और इमरान ने भी जिक्र किया था कि हमारे कैसे ये हम STEM हमें बेनिफिट करता है. स्पीकिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फ्लडिंग, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर हम में से कोई भी यहाँ पे हाइड्रोफोनिक फार्मिंग से थोड़ा सा एक्लिमेटाइज है. हाइड्रोफोनिक फार्मिंग बेसिकली फार्मिंग होती है जो एक नेचुरल प्रोसेस है फार्मिंग का. जैसे नेचुरल फार्मिंग में आपको मिट्टी चाहिए, आपको बीज चाहिए और आपको सूरज चाहिए. हाइड्रोफोनिक फार्मिंग में आप मिट्टी को एक सोल्यूशन से रिप्लेस कर देते हैं. वो केमिकल्स बना के आप एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें बीज डालते हैं और लिटरली एक रूम के अंदर आप लाइटें लगा देते हैं. एंड दैट इज हाउ कंट्रीज में हाइड्रोफोनिक फार्मिंग से लिटरली क्रॉप्स एंड क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं. और ये यूं हो रहा है बिकॉज अभी लैंड बहुत सैलिनेट हो रहा है, हमारा हमारा लैंड जाता जा रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है. So these are real time issues, और इन real time issues को food crisis को manage करने के लिए scientists are actually developing things. Example for hydroponics, hydroponic farming for that matter. Likewise in mathematics, everything is so calculated. Efficiencies need to be there. आपको probabilities करके, stats करके, you have to come up with efficient solutions. आपका input to output ratio कैसे efficient बनाएंगे? That's where mathematics come in. साइंसेस की हमने क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की
various biosciences degrees available हैं जहाँ पे हम लोग हम इससे various career paths ले सकते हैं, and engineering for sure, various socio-economic problems कि कौन से devices create करने हैं, किस किस्म की गाड़ियां बननी है आगे, कैसे traffic problems जा रहे हैं, होना क्या है, like so all this we thought we can share, like these are the current problems and issues which we need to tackle. So yes, so moving forward with this, अभी जो हमारा बहुत interesting सवाल आया था, I think Miss Dultana, if I'm not spelling the, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रही हूँ, मिस जैसे आपने जिक्र किया कि कितनी एग्जॉस्टिंग होती है कि इतनी सारी चॉइसेस होती हैं, तो यस we do feel that what about creativity, हम like let's say we as humans, हम सबकी मुख्तलिफ पर्सनालिटीज हैं, हम में से कुछ अच्छे लिसनर्स होते हैं, कुछ अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, कुछ बस खामोशी में काम करना पसंद करते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट्स हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स हैं, our brain could be very statistical, our brain could be very artistic. So if you really put the human brain in your mind like this, and आपकी brain बहुत colorful, fancy, आपको शेर व शायरी पसंद है, music पसंद है, आपको इतना boring vectors और physics के काम नहीं करने, even then as exhausting as it sounds, the STEM, the analytics, the logical thinking, the information, the math will benefit your creativity as well, even then. So moving forward, स्टीम का जैसे हमने जिक्र किया, स्टीम के STEM, अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमने आई थिंक एक प्रेजेंटेशन में का जिक्र किया था, हमारे एक वैल्यूएबल ऑडियंस से हमसे सवाल भी किया था. सो arts is humanities, literature, music, economics, sociology, psychology, everything which is non-science. So when you blend it together, even then the outcome is wonderful for that matter. And this is probably going to be a need of the day. आगे जाके आप तो कोई, I think ये जो STEM का T है, वो टेक्नोलॉजी के बगैर तो गालिबन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. So probably that the T we really need to be mindful of. चाहे आप entrepreneur हो, आप कोई job करेंगे, किसी भी चीज में. So yes, this is a bit on how we're going to take our careers forward with STEAM. I think we spoke about this earlier as well, Noj, that people who just think that STEAM, yes, is a way of life and we're going to get a job in science, technology field. But as entrepreneurs, if you start a company, all right, which is based on any of these mediums of any of the science, or, how would that sound and how would that excite anyone who wants to become an entrepreneur? Imran, very valid question. Even for entrepreneurship, even so more. Example, if you're opening a restaurant, obviously आपके पास अच्छा सरमाया है, आपको खाना बनाना आता है, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं बहुत आराम से. लेकिन अगर आपको वाकई उस रेस्टोरेंट को एक्सपैंड करना है, तो आपने फूड के डिफरेंट टेम्परेचर्स देखने होंगे, आपको फॉर्मूलाज रिकॉर्ड करने होंगे, आपको रेसिपीज बनानी होंगी, आपको अपनी वेस्टेज कम करनी होगी, आपको एम्प्लॉय एफिशिएंसी रेशियो बढ़ाना होगा, आपको 10 चीजें करनी होंगी जो कि आपको एफिशिएंट बना सकता है. और अगर आपने शायद साइंसेस नहीं भी पढ़ा हुआ तो ठीक है, आप 4 मुलाजिम भी रख सकते हैं वो सब कुछ करने के लिए. However, imagine knowing all of that and being equipped with all of that. आज अगर मुझे अपनी पॉडकास्ट बनानी है तो obviously I can just order equipment from here and there. However, अगर मुझे खुद थोड़ा सा भी कैनवा आता है या कुछ थोड़ा सा एडिट करना आता है, थोड़ी बेसिक नो हाउ है, तो अगर मैं किसी फ्रीलांसर को हायर भी कर रही हूँ तो I will be able to understand him or understand the nature of the requirement and not be dictated. So STEM basically हमें empower करता है, हमें एक way of life देता है जो कि आगे जाके और इवन इस मौजूदा दौर में जरूरत है, स्पेशली फॉर द यंग पीपल and for people of any age. There's never too late to learn. So like you said, for businesses even so more, चाहे आप रेस्टोरेंट हो, आप एजुकेशनिस्ट हो, आप एक कॉल सेंटर खोल रहे हैं for that matter, आप कोई BPO बना रहे हैं, आप for anything, absolutely it would be very empowering for you to know the basic, for you to be good at technology and maths and basic disciplines. Thank you. Yeah, so we take this forward. So we're almost coming to the end of this. So yes, we अक्सर हमें बड़ा सुपरफिशियल सा लगता है कि क्या साइंस कर रहे हैं आप लोग, और हम बच्चों को भी, बच्चे कभी कभार I often as a counselor I feel कि students who little
कोई ज्यादा स्पोर्टी होते हैं, थोड़े ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो ह्यूमैनिटीज पढ़ना है. So like, it's not a superficial understanding. It's more, there's a larger picture to STEM. So that's really the real purpose. और थोड़ी myths हैं basically कि girls can't be scientists, like वो तो अच्छी mathematicians ही होती. So I think it's really the opposite. STEM is boring. Like, really, like if you really go to a lab and like the way the colors work and the way it works, so शायद like नजरिए की बात है, but if you really look at the core of it, science, technology, engineering and mathematics could be very exciting. Especially the technology T is an essential. It could be as exciting as it could be. You are not a nerd if you're studying sciences. आप बिल्कुल भी nerd नहीं हैं. वो जो एक like बिल्कुल एक चश्मिश बच्चे का एक concept आता है. It is not that. It is like the new thing, the essential thing to do. It is a lot of creativity. It is a lot of fun. There are jobs. And even if you do your own business, like Imran aapne mentioned kiya, it is going to be the need of the day. So definitely this. And we do feel that everyone should take STEM and change the world because it's the need of the time. So yeah. Excellent. So Is that the last slide? this is the last slide, very much. So then we have, if you have any STEM stories, so you could share with us. Yeah. So I think, yeah, we're live on YouTube as well. You can also email us later. You are all subscribers of the EPB newsletter, where you can post your feedback on it. I think I'll, in the interest of time, because we are 5 minutes over it, but we started 5 minutes late. So I think we can take 1 or 2 more questions I have on the screen. So, some direct questions as well, that if I've done my O levels, how do I, now pursue STEAM education? So I mean, that is obviously depends on the regional place you're living in, the city that you're living in. You could be anywhere in the world, because this live stream is going across the world. You can definitely talk to our local education board learning facilitators as well. And in terms of another, for the people who are in late 20s or late 30s, how do they pursue STEAM opportunities? Because they're done with their college education, they're done with that. And this question is again from Zora, that in a few of our Pakistani universities, degrees usually aren't giving us practical exposure or the platform to think critically. And that is so classic, because unfortunately in Pakistani education scenario and universities, practically you're not getting this critical thinking. And and so where do we get that from now, and how do we apply that to solve crucial problems? I think this will probably be the summary of all the whole webinar. Yes, Marcia. Okay, so yes, valid question, Ms. Zora. Universities may probably नहीं है इतना exposure, definitely. University पे depend करता है. आप sciences like जिस किस्म का अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, जिस किस्म का एक्सपोजर आपको एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिलेगा, वहाँ पे ढेर सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वो मुख्तलिफ होगा जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होगा. सो इट रियली डिपेंड्स. लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, जनरली एक्सपोजर कम है. एंड येस, देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ ड्राइव टू इट. और जो आपने कहा कि हम 20s में लोगों को कैसे परसू करवाएं स्टीम, तो डेफिनेटली हम जब 20s में तकरीबन स्टूडेंट्स हमारे इंटरमीडिएट में होते हैं या ए लेवल्स में होते हैं, तो अगर उन्होंने ओ लेवल या मेट्रिकुलेशन में नहीं लिया हुए साइंसेस, तो वो फिर जाके ए लेवल में नहीं ले सकते फॉर श्योर. ये आपकी बात दुरुस्त है. उसमें हम डेफिनेटली एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर, हाँ, वो अपने आप को शॉर्ट कोर्सेज से इक्विप कर सकते हैं, डिजिटल कोर्सेज कर सकते हैं, कोडिंग के वेरियस प्रोग्राम्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वेरियस प्रोग्राम्स हैं, वो उससे तो अपने आप को वाबस्ता कर पाएंगे. लेकिन शायद जो कोर, जो साइंसेस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के साथ शायद वो लेट 20s में वो ना कर पाए, बिकॉज हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइंड है टू रियली आंसर इट करेक्टली. सो यस, द आईटी अपॉर्चुनिटीज वो दे वुड बी ओपन टू लर्न, या फिर वो कोई मैथ की फील्ड्स वो लोग ले सकते हैं. लेकिन इफ अगर उन्होंने बेसिकली अपने टीन्स में वो वाली मेट्रिक या ओ लेवल्स में वो मिस आउट किए सब्जेक्ट्स, फिर उनके लिए लेना मुश्किल होगा. कंप्यूटर साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे वो शायद एक्सपैंड कर सके 20s में. And I think, as we said, that STEAM is not just a course. It's not like degree कोई आपको कहेगा now he is STEM certified. अगर आप गांव में रहते हैं
आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपके पास अपॉर्चुनिटीज है टू लर्न फॉर एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल। जिस तरह अभी भी हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो दे स्टार्ट वर्किंग इन द फील्ड्स, राइट। खेती बाड़ी में सीखते हैं, और वहां पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन जो फार्मर्स, जो किसान करते हैं, उनकी यील्ड बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फॉलोइंग द ओल्ड मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग, पुटिंग इन द सीड्स एंड इवन सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो आप ये ना सोचें कि बस मेरे पास आपकी डिग्री नहीं है, कोर्स नहीं है, मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा तो मैं नहीं कर सकता। यू विल स्टिल बी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ स्टीम अगर आप प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हर चीज की देखें, अब ऑब्वियसली दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन है, इन टर्म यूट्यूब की वीडियोस हैं, यू गॉट स्मॉल कोर्सेज अवेलेबल, यू गॉट सो मेनी वेबसाइट्स, you can keep learning, you can you can just have to keep in mind that yes, is it upskilling myself? अपस्किलिंग का मतलब यही कि जो आपने स्कूल में नहीं सीखा, कॉलेज में नहीं सीखा, यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा, अब वो स्किल क्या आप सीख सकते हैं जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में फॉल करती है। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें आप नए अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आप अपने वालिद को या उनके वालिद को बता रहे हैं कि अब इस तरह से अगर हम ये एग्रीकल्चरल को अपना बढ़ाना चाहें तो हम यूजिंग दीज न्यू टेक्नोलॉजीज या साइंसेज हम बढ़ा सकते हैं। तो इट्स अगेन it's not limited to a degree and course. Yes, for people who are studying in O levels, A levels, matriculation, FSC, HSC, they can choose it as a career as well. But for choosing it as a lifestyle is a real choice. Yeah, वो absolutely. उससे आपको कोई नहीं रोक सकता, उससे आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपके घर वाले नहीं रोक सकते, राइट? दैट इज अगेन अ वैलिड चॉइस. I think we're well above time, more than 1 hour. Thank you very much, Nausheen, for enlightening us with all your knowledge and showing us a very good presentation. I love the videos too, and I think we would probably do. We've opened up a Pandora box actually, so we'll have to do more sessions on it. I would request everybody, please send us emails. Post it on the newsletter. You can reply to us on the email which you got as a newsletter on your feedback. And you can post comments on our YouTube video, which will still be available after we go offline. You can put your comments there. And thank you very much, Saif, and other people who are appreciating the service. As you know, we're all working voluntary. Even Nausheen has come and taken her time in a voluntary capacity. So thank you very much again. And thank you. It was I love the audience. It was very interactive, and yes, it's phenomenal service. So we hope I think एक दूसरे से अगर कुछ हम इस session में सीख पाए. So it's like some information is out there on my Weeds Facebook page as well, on the Instagram page as well. If you could like that, obtain anything from that, your own YouTube channel is there. So I think information jitni bhi share ki jaye utni kam hoti hai. So yes, thank you so much to all of you for being here. Thank you very much for telling us about your I think Weeds Counseling and Talent Management. That's your company name. Anybody can join you on the further discussions and counseling opportunities. So thank you very much, everybody, and thank you, Nausheen. I'll just end the show now. Stopping the recording first. Thank you, everybody. Take care. Thank you, Nausheen. Allah Hafiz.